Assalamualaikum. This is a Discrete Homotopy Theory lecture series. So today we will see the proposition and definitions of homotopy theory, discrete homotopy theory. So first of all, we will see this proposition 1.5, 1.15. In previous video, we described this definition in detail. This is H graph map. Okay. So let's read this proposition, then explain in detail. So according to proposition 1.15, path connectedness of vertices in a graph X is an equivalence relation XV generated by the adjacency of vertices. Okay. So they are saying there is a proposition path connectedness of a vertices. अगर हमारे पास vertices के path connectedness है vertices के दरमियान in a graph X is the equivalence relation on XV. Vertex set के ऊपर equivalence relation hold करेगा generated by the adjacency of vertices. So इसके बाद का पैराग्राफ है कि given a graph map f from x to y, ठीक है, there is a graph map from x to y and there is a path in x, ठीक है, where from x to x prime in x. If we compose f compose gamma is a path in x y f of x to x prime. So thus if two vertices in x are path connected, then their respective images under the f are path connected in y. So let's define this proposition. Sorry, this is a remark. So let's read this remark. They are saying कि हमारे पास जो है there is a path f from x to y. Okay, sorry, there is a graph map from x to y where x is a graph and y is a graph, and we have a path in x from in to x such that किस तरह का this is a path gamma is a path from x to x prime in x. Okay, from is a graph map from in to x. What type of graph map? If we substitute 0, so we get x, and if we substitute n, we get x prime, which means that के in से लेकर हमारे पास this is the in. So if we substitute first point, so in x के अंदर हमारे पास क्या मिलेगा? x मिलेगा. And if we substitute in the gamma, if we substitute n in the gamma, so we get last point x prime. सही है? तो ये हमारे पास क्या है? एक पाथ है. ठीक, मतलब ये इस तरह से है कि आप जो है आई एन से लेकर देखें, आई एन आपके पास क्या है? ग्राफ इंटरवल ग्राफ है 0 1 2 n तक इंटीजर्स हैं जिसके वर्टिसेस और आई इसकी जो एजेस हैं क्या? i to i+1 है. ओके, सो x के अंदर हमारे पास एक पाथ है, लेट्स से x to x प्राइम है, बीच में जो है आपके पास और भी वर्टिसेस हो सकते हैं, मे बी तो एक एज ही हो. तो दिस इज अ पाथ गेमा. ठीक है, x में है कितनी लेंथ का? n लेंथ का. So this is a graph map gamma from in to x. अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक और पाथ है, f is a path from x to y. ठीक है, x is x to y. If we substitute x, so we get f of x. If we substitute x prime, so we get x prime. So according to the definition of graph map in स्टार्टिंग वीडियोस कि ग्राफ मैप क्या करता है कि एच को प्रिजर्व रखता है. तो अगर हमारे पास यहाँ पर एच है, एक्स से एक्स प्राइम तक एक इंटर नंबर ऑफ एजेस हैं, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ एजेस होंगे. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ नंबर ऑफ एजेस हैं. ठीक है, सही. अब हम क्या करते हैं? अगर हम कंपोज करें, इफ वी कंपोज f compose gamma, this is starting from in to x to y is y. सही है, यहाँ आई एन से लेके x तक हमारे पास gamma होगा, x से y तक हमारे पास f होगा. So this is gamma compose, this is f compose gamma. So if we substitute 0 in this place of gamma, so we get, according to definition of gamma, we get x. So x को जो है हम f में substitute करेंगे, we get f of x. Okay, so if we substitute 0 in this composite map, n substitute करें तो we get x prime. ठीक है, x प्राइम को हम f में सब्सटीट्यूट करेंगे, f of x प्राइम. सो f of x से लेकर f of x तक, x प्राइम तक हमारे पास एक क्या होगा? मैप होगा. दिस इज अ पाथ. ठीक है, दिस इज अ पाथ. व्हाट टाइप ऑफ पाथ? दिस इज अ कंपोजिट ऑफ f कंपोज gamma. ठीक है, दिस इज अ पाथ ऑफ
This is a path from starting from f of x and end at f x prime in y, ठीक है। कि ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास x से x प्राइम तक हमारे पास गेमा है, और अगर हम इसको सब्सटीट्यूट कंपोज करें f के साथ, सो अगेन वी गेट अ पाथ। सो लेट्स रीड अगेन द डेफिनेशन। दे आर सेइंग कि हमारे पास एक पाथ है, सॉरी ग्राफ मैप है और एक पाथ है। तो अगर हम कंपोज करते हैं पाथ इन, तो हमारे पास एक और वाई में पाथ मिलेगा जो एफ ऑफ एक्स से एक्स प्राइम तक है। दस if two vertices are path connected in x, so their respective images are also path connected in y, जो हम देख चुके हैं, ठीक है। जो हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं कि इसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं कि भाई हमारे पास जैसे यहाँ पर एक पाथ था x के अंदर, x से x प्राइम तक, तो y से y प्राइम पे भी एक पाथ होगा जो क्या होगा, f कंपोज गैमा होगा, ठीक है। सो लेट्स रीड नेक्स्ट डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रोपोजिशंस हैं, इनको हम बाद में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टडी दिस पैराग्राफ होमोटॉपी थ्योरी ऑफ ग्राफ्स। अच्छा, अच्छा ये कह रहे हैं कि वी आर नाउ रेडी टू डिफाइन द homotopy एंड homotopy equivalence, ओके। सो बिफोर डूइंग सो वी मेक ऑल ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प्स मोटिवेट दिस notions। Observe that के two distinct path है, they are saying कि two distinct path from x to y है, सॉरी ग्राफ मैप है, सॉरी। f और g जो है ग्राफ मैप हैं x से y, आर एडजेसेंट according to the home internal home definition। सो ग्राफ होम इंटरनल होम ग्राफ के अंदर ही एडजेसेंट होंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ ग्राफ मैप इस टाइप का कि एच आई वन से लेकर होम स्टार एक्स वाई पर है, कि अगर हम जीरो सब्सटीट्यूट करें तो एफ मिलेगा, वन सब्सटीट्यूट करें तो जी मिलेगा, और एक इक्विवेलेंटली which is equal to the h is a graph map from I x box product to I1 to y such that h of dash comma 0 is equal to f or h dash comma 1 is equal to g। So let's read this definition in detail। चलें इसको हम देखते हैं डिटेल के अंदर थोड़ा सा कि क्या किस तरह से बता रहे हैं। So let's small that this again we should small। चलें इसका हम कलर चेंज करते हैं, वाइट कर देते हैं, ओके। चलें अभी हमारे पास डेफिनेशन है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बताते हैं, और इसका प्रूफ जो है हम बाद में देख लेंगे। सो वी आर डूइंग दिस। चलो, we are now ready to define the homotopies and homotopy equivalences. Before going, so we make a small observations that helps motivate these notions। observe that अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास देखें, लेट्स से x और y जो है हमारे पास दो ग्राफ हैं, और there are two graph maps from x to y, okay, x to y, sorry, this is x to y are adjacent, they are adjacent, f comma g are adjacent, which means that there is an edge between f to g according to internal home की definition के according, कि यहाँ पर इसके इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि f और g जो है हमारे पास वर्टिसेस से और उनके दरमियान है चुकी, सो दे आर एडजेसेंट इन अ ग्राफ होम स्टार x कॉमा y, ठीक है। इसमें इंटरनल होम ग्राफ के अंदर होंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ पाथ, इफ देयर एग्जिस्ट अ पाथ, सॉरी if there exists a graph map, ठीक है। अच्छा इसको हम डिफाइन करते हैं। if there exists a graph map, what type of graph map from IH is a graph map from I1 to home star x comma y, ठीक है। so if we substitute such that if we substitute in the place of I is equal to 0, so we get first f, and if we substitute 1, so we get g, okay। And equivalently they are saying that there exists also a graph map। what type of graph map, x box product length इसके साथ I1 के साथ to y, so if we substitute h dash comma 0 in the place of I की जगह पे 0 for all x, ये for all x के लिए है, for all x belongs to xv, so we get f,
and h dash of 1 if we substitute in the place of i1 क्या है हमारे पास 0 से 1 है I की जगह 0 रखेंगे तो we get first graph map and in the place of I is equal to 1 so we get G so they are saying कि F is adjacent to G कब जब हमारे पास इस तरह का मैप हो ग्राफ मैप फ्रॉम I1 टू फॉर्म टेंसर x, y तक हो या जो है इस तरह का ग्राफ मैप और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो then we can say f is adjacent to g. Okay, so let's end this video. फिर next video में इंशाल्लाह हम होमोटॉपी थ्योरी होमोटॉपी की डेफिनेशन देखेंगे। अल्लाह हाफिज, यहीं तक रखते हैं।